Hello everyone. Let's start with utility. Now, utility means is the power to satisfy human wants. Now, in my first video in consumer behavior and demand, we have learned what is utility. I have given you the definition over there. You can go and check that. I'll give you the link in the description box. So for now, utility is the power to satisfy human wants. Human wants are unlimited, and that is why Alfred Marshall a renowned economist have given utility, and he said that utility can be counted, and that is why he named it cardinal utility. Now, cardinal means, and if you see in the dictionary, it means anything which can be counted is known as cardinal. That means if utility or satisfaction level can be counted and can be expressed in numbers, so he has given this cardinal utility. On the other hand, this was criticized by Allen and Hicks, and they said that the satisfaction level cannot be counted or it cannot be quantified. It can only be taken as an order, or it can be put into rankings, and that is why they said the utility are ordinal in nature. That means we have got two types of utility. One is cardinal utility and the other one is ordinal utility. The cardinal utility is given by Alfred Marshall and the ordinal utility is given by Allen and Hicks. ठीक है, यूटिलिटी क्या होता है? जो हमें संतुष्टि दे उसको कहते हैं यूटिलिटी. ठीक है, किसी भी सामान को खरीदने से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट इज नोन एज यूटिलिटी. और यूटिलिटी दो तरीके का होता है, एक कार्डिनल होता है और एक ऑर्डिनल होता है. कार्डिनल मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हो, और वो किसने दिया? वो दिया एल्फ्रेड मार्शल ने. ऑर्डिनल लेकिन क्या कहा इन्होंने, एलन और हिक्स ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं हो सकता कि हम अपनी संतुष्टि को नंबर में कैसे आंकेंगे, उनको कैसे किस तरीके से उनको गिनती में ला सकते हैं, वो नहीं हो सकता. इसीलिए जैसे हम पानी अगर पीते हैं तो कितना हमें संतुष्टि हुआ वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, हम बता नहीं सकते हैं उसको. इसीलिए इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यूटिलिटी जो होता है वो ऑर्डिनल हो सकता है. हम बता सकते हैं कि एक गिलास पानी पीने से हमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली, दूसरी गिलास पानी पीने से उससे थोड़ा कम संतुष्टि मिला, और इसीलिए ये ऑर्डर और रैंकिंग में भरोसा रखते हैं. Now there are few assumptions under cardinal utility, that is rationality, ठीक है, पहला. दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, ठीक है, और इम्परफेक्ट नॉलेज टू द कंज्यूमर्स, यानी कंज्यूमर्स के बाद बहुत सारा नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में. ठीक है, ये सारी जो है इनके अजम्पशंस हैं. ऑर्डिनल ने क्या किया? इनसे कुछ अजम्पशन लिया और कुछ अपना ऐड कर दिया. जैसे कि ये वाला अजम्पशन इनका नहीं है कि इम्परफेक्ट नॉलेज, इन्हें इनके हिसाब से जितने भी कंज्यूमर हैं उनको पता होता है कि मार्केट में क्या हो रहा है. ठीक है, ये कार्डिनल का अजम्पशन कौन सा? रैशनैलिटी. रैशनैलिटी का मतलब क्या है? द कंज्यूमर्स आर वेरी स्मार्ट इन नेचर, यानी कि वो कम दाम में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन पाना चाहते हैं और कभी भी वो गलत डिसीजन नहीं लेते हैं. ये अजम्पशन है इनका. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट का मतलब है जो भी इनकम है या एक एडिशनल इनकम से हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, इसीलिए ये कांस्टेंट माना गया है. तो ऑर्डिनल ने क्या किया? इन्होंने ये वाला भी लिया है, ठीक है, और ये वाला भी अजम्पशन माना है, पर इन्होंने ये assumption नहीं रखा. ठीक है, now why we are reading all this?
we are reading all this in order to understand indifference curve, which comes under ordinal utility. So indifference curve is given by Allen and Hicks. I hope I am clear about this. Okay, let's start with indifference curve. हाँ, और लॉ ऑफ डिमांड जो हमने पहले कवर किया है, लॉ ऑफ डिमांड would come under cardinal utility. Remember we used to quantify price and quantity demanded, all of that. मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसका एक और अजम्पशन है. ये सारा कुछ जो है वो कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर आ जाता है, जहां पर भी हम यूटिलिटी को यूटिल्स में, हाँ इन्होंने एक मेजरमेंट भी दिया है यूटिल्स. यूटिल्स जैसे हम वेइंग मशीन में किलोज में नापते हैं, ठीक है, लीटर्स में नापते हैं, दे आर द मेजरिंग यूनिट्स. उसी तरह जो यूटिलिटी है उसका इन्होंने यूटिल्स बताया है, UTILS, यूटिल्स. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इंडिफरेंस कर्व. Okay, indifference curve. Let's start with the definition first. It is the locus point or combination of two goods, rather commodities लिखा जाता है हर जगह पे, commodities which gives equal level of satisfaction to the consumer. Okay, it is the locus point or combination of two commodities which gives you equal level of satisfaction to the consumer. यानी कोई भी कंज्यूमर है, यहाँ पे सिर्फ दो गुड की ही बात होगी, दो कमोडिटी की ही बात होगी, और जब इन दोनों कमोडिटी को वो खरीदते हैं देन दे आर इनडिफरेंट ऑफ टू गुड्स. यानी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इतना एक बंडल सपोज एक्स एंड वाई है, एक्स और वाई, ठीक है, अगर वो एक अमाउंट ऑफ एक्स खरीद रहे हैं और 3 अमाउंट ऑफ एक्स खरीद रहे हैं, ये हो गया ए बंडल. ठीक है, बी में हम ये रखते हैं, सी में हम ये रखेंगे. ठीक है, सो व्हेन वी प्लॉट दिस क्वांटिटी ऑन अ ग्राफ वी गेट अ ग्राफ लाइक दिस. ओके, ठीक है, 1 2 and 3, 1 2 and 3. Understood? So this is your x-axis, this is your y. I hope this is visible to you. Okay, so this one is A point, B point and C point. Similarly there are various points over here. कुछ भी हो सकता है ना, 1.5 हो सकता है, यहाँ पे 2.5 हो सकता है. इन सारे बंडल्स के बीच में, यानी ए खरीदे या बी खरीदे या सी खरीदे कंज्यूमर, इनको एक तरीके का ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यानी एक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, विच मेक्स इट इनडिफरेंट. मतलब ये कुछ भी खरीदे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर ये इनको ए भी मिला तो भी ये उतना ही सेटिस्फाइड होंगे जितना बी खरीदने पर और सी खरीदने पे होंगे. सो इस सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं, दैट इज वाई द लोकस पॉइंट वर्ड इज यूज्ड हियर, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स को जब भी हम मिलाते हैं, जिनका मैथ्स होगा उनको पता होगा, सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं और एक लाइन बनता है, इसको हम लोग लोकस कहते हैं. ठीक है, सो देयर आर वेरियस माइन्यूट पॉइंट्स हियर. इन सबको जब हम मिलाते हैं तो ये वाली लाइन बनती है, विच इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व. So once again the definition, it is the locus point or combination of two commodities which gives you equal level of satisfaction to the consumer. Okay, let's start with the diagram now. थोड़ा और डिटेल में इसको देखेंगे.
now the indifference curve is like this. इसको short में हम लोग indifference curve को IC लिखेंगे, ठीक है. So this is our indifference curve. Now what happens? As we have taken x and y good, so we will take y good on this axis and x good on this axis. ठीक है. These are our combinations A, B and C. ठीक है. Consumer would buy 1 quantity of y good and 3 quantity of x good, 2 quantity of y good, 2 quantity of x good, 3 quantity of C good, y good and 1 quantity of x good, and it will remain on the same indifference curve. Now what happens? Suppose the income increases, okay? So we have got more money. Now what happens? The consumer here in this concept will spend all of his money. There is no concept like saving. So what happens? Because this is an assumption taken by Hicks and Allen, okay? So what happens? Since income has increased, they can buy more goods for x and y both. They can buy both the goods more in quantity. So what happens? Their level of satisfaction would increase, and therefore the indifference curve would shift here, upward shift. And suppose the income is less. So what will happen? The indifference curve will shift towards downward. Okay. So the first reason is income. Okay. Okay. What happens? Second reason is price. Suppose the price of the y good and x good both decreases. Then also what happens? It increases or decreases. Let us name it IC0. Okay. So what happens? It increases the level of satisfaction. Okay. So this one is indifference curve 2, indifference curve 1, and this is indifference curve 0. When there is a set of indifference curve, then it is known as indifference map. Okay? Map. In map, what happens? There is a set of indifference curve where there are more than 2 indifference curve. It is one indifference curve. That means only one indifference curve, there are 2 more or 3 more, so that is known as indifference map. ये पूरे सेट को हम indifference map कहेंगे, यानी एक से अधिक अगर indifference curve है किसी ग्राफ में दिखाया जा रहा है, then this one is known as indifference map. Okay, let's come to the properties, which is very important. ये वाला किसी भी एग्जाम में properties जो है इनके पूछे जाते हैं, ठीक है? So let us begin with the properties. The very first property is marginal rate of substitution is negative. अब ये marginal rate of substitution क्या है? This marginal rate of substitution is the slope of indifference curve. Now we have seen that in indifference curve, what happens? It is downward sloping. Why is it downward sloping? Because there is y good here, and if you decrease the quantity of y good, you have to increase the quantity of x good, and that is why it is downward sloping. Okay. So what is the slope? This is the slope. Delta y by delta x. Now a very interesting fact that how slope is determined and what is the meaning of this triangle, और किन्हीं किन्हीं बुक्स में देखा होगा आपने dy by dx लिखते हैं, ठीक है? कहीं पे आपने ये वाला सिंबल देखा होगा, दिस इज ऑल्सो डेल्टा dy by dx, ठीक है?
तो पहले आपको आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस वन. दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक्स. ओके, सिंस वी आर बिगिनिंग द कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, let me explain this one first. Okay, suppose this is a point A and this is a point B. Okay, if we move from point A to point B, it is denoted by delta. Okay, कोई भी चेंज जो है वो अगर इतना बड़ा होगा, A से B पॉइंट तक का बड़ा होगा, तो उसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे. ओके, नाउ देयर इज अ पॉइंट ओवर हियर C. अगर हम A पॉइंट से C पॉइंट तक मूव करते हैं, ठीक है, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम A टू C पॉइंट, देन इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d. ओके, लिटिल चेंज. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, there is a point over here, say it is P, or little minute points are here. Okay, say R, S, T, anything you name it. Okay, now if we move from A to R, R to S, S to T and T to P, there is very minute change. Okay, so this change is denoted by this delta. Okay, and that is why these are the symbolic representation of change. They all represent change, but the only difference is the type of change. This delta is the bigger change, smaller, very small. Okay, I'll write it for you. This one is big change. Okay, this is small and this is very small. Now this will help you in every concept of economics. Rather any other subject also you can understand it very well, and it will help you to understand rate of change also, in which rate the changes is taking place. Okay, so again coming back to marginal rate of substitution, we will write marginal rate of substitution as MRS. Okay, so the first property MRS, let us understand what is MRS first. Okay, this is our indifference curve. This is our y good, this is our x good. Okay, now this is 1, this is 2, this 1, this is 2. Okay, what happens, in order to have one additional unit of x, how much amount of y we have to reduce? Okay, this is known as marginal rate of substitution. What is marginal? As I always say, marginal means additional. Okay, how do we represent MRS? We represent MRS as delta x delta y by delta x. So you always remember that the denominator is always the reason why the y is changing. Okay, why numerator is changing. So denominator is always the reason and the numerator is always the effect. This is the effect. Okay, I'll say this is cause and effect. ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा. क्या होता है, कभी भी जब आप ये रेशियो देखते हो ना, कहीं पर भी देखोगे आउट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो, यू मेक दैट अंडरस्टैंडिंग इन योर सेल्फ कि ये जो नीचे वाला है इसके वजह से ही ये वाला चेंज हो रहा है. ठीक है, सो डेल्टा एक्स इज द कॉज, यानी इसमें अगर चेंज आया है इसलिए इसमें चेंज आया है, एंड दिस शोज द अफेक्ट. सो इन ऑर्डर टू हैव द एडिशनल, एडिशनल क्यों बोलेंगे, क्योंकि मार्जिनल है, एक एक्स्ट्रा यूनिट एक्स को पाने के लिए हमें वाई का कितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन करना होगा. लेट्स से आई विल मेक इट 10 and 20. ओके, इजीली अंडरस्टैंडेबल. 1 यूनिट ऑफ एक्स को पाने के लिए हमें 10 यूनिट्स ऑफ वाई गुड को सैक्रिफाइस करना होगा. ओके, एंड दैट इज द स्लोप. सो चेंज इन वाई कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, और चेंज इन एक्स कितना है, 1 है. ठीक है, एंड दैट इज वाई द स्लोप इज -10. वाई इज दिस माइनस, माइनस क्यों है ये, बिकॉज द स्लोप इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये माइनस है,
दिस इज माइनस ओवर हियर एंड दिस वन इज प्लस ओवर हियर, ठीक है, इसीलिए ये -10 है, दैट इज वाई द स्लोप इज नेगेटिवली स्लोप्ड, और IC जो है वो इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ, एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, कितना हमें एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स के कारण कितना y को सब्स्टिट्यूट करना हो, किस रेट से y को सब्स्टिट्यूट करना होगा, दैट इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे हमारा पहला प्रॉपर्टी क्लियर होता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y, ये लिखते हैं ऐसे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, marginal rate of substitution for x for y is equal to delta y by delta x। अगर मन है तो यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं हम लोग, अदरवाइज इट इज अंडरस्टैंडेबल कि पहले से यहाँ पे माइनस है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, दैट इज वाई इट इज इन माइनस। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। कमिंग टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, हमने अभी इंडिफरेंस मैप करा, ठीक है, इंडिफरेंस मैप फिर से बनाते हैं हम टू अंडरस्टैंड द सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज वेरी इजी। सो द सेकेंड प्रॉपर्टी इज द हायर द इंडिफरेंस कर्व, इट गिव्स हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, ठीक है, हायर इंडिफरेंस कर्व gives higher level of satisfaction. Okay, when I was explaining indifference map, I told you why the indifference curve move upwards, because it gives you more income and it allows you to buy more of y good and more of x good, ठीक है। हम इंडिफरेंस 1 पे यहाँ पर हैं, ठीक है, अभी इसी को हम आगे थोड़ा बढ़ा दें तो हम इतना सारा एक्स गुड और एक्स्ट्रा खरीद पाएंगे। जब भी हम एक्स्ट्रा खरीदते हैं कुछ तो हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है, और इसीलिए वी गेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एट दिस पॉइंट। इसी तरीके से इसको आगे बढ़ा, विल गेट दिस मच ऑफ एक्स गुड, ठीक है। सिमिलरली हियर, यहाँ पे देखो, वी गेट मोर अमाउंट ऑफ वाई गुड, ठीक है, ये वाला भी अगर ऐसे देखेंगे, वी गेट मोर अमाउंट ऑफ वाई गुड, थोड़ा उल्टा हो गया, ये नीचे ही रहेगा, ठीक है। सो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ satisfaction. This is the second point. ठीक है। Now the third one is indifference curve never intersect each other. कभी भी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व विल बी सेम हियर। यहाँ पे अगर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप देखा जाए तो सेम होगा, कभी भी ये सेम नहीं होगा, बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और ये तो दो इंडिफरेंस कर्व का हमेशा अलग अलग होगा, एंड दैट इज वाई दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एंड दिस इज ऑल्सो डिमिनिशिंग। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिमिनिशिंग है, इसीलिए द इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, लेट्स कम टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट। इंडिफरेंस कर्व नेवर touches the x or y axis. This means that indifference curve is rectangular hyperbola in shape. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब ये होता है कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस
and this portion is parallel to x axis. Okay, so इसको कितना भी खींचोगे ये पैरेलल रहेगा, इट विल नेवर मीट एक्स वाई एक्सिस, और इसको भी कितना भी खींचोगे तो ये भी ये यहाँ पे नहीं मिलने वाला, इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस, एंड दैट इज वाई indifference curve never touches the x और y axis since it is the bundle of goods. ये तो कॉम्बिनेशन है ना गुड्स का, ये x और y गुड का कॉम्बिनेशन है ना, तो एक कोई गुड जो है वो जीरो हो जाएगा अगर ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ऐसे ये तो फिर जीरो हो जाएगा, यहाँ पे x वाला जो गुड है वो जीरो हो जाएगा और यहाँ पे y होगा. दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड, दैट इज वाई इट इज नॉट पॉसिबल. Next is transitivity. Transitivity का मतलब क्या होता है? If A is greater than B, okay, so B is not greater than A. ठीक है, यानी indifference curve एक बार ज्यादा हो गया, ऊपर हो गया, higher level of indifference curve is always higher. It will always yield higher level of satisfaction. ठीक है, इसी के साथ ये भी एक है, इफ A is greater than B is greater than C, then A is greater than C. ठीक है, this is known as consistency. ठीक है, so indifference curve will have consistency in it. ठीक है, this is also there. Seventh property is very easy, that is it is convex to the origin. Convex का मतलब क्या हुआ, मतलब ये इसका पेट जो है वो origin के तरफ झुका हुआ रहता है. ठीक है, and that is why it is convex to the origin. Why it is convex to the origin? क्योंकि MRS जो है वो नेगेटिव है, यानी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिव, एंड दैट इज व्हाई इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन. हाउएवर इन बुक्स और दूसरे जगहों पे इसको पहले नंबर पे लिखते हैं, बट आई थॉट इट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये अंडरस्टैंडेबल है ना, इसीलिए आई टुक इट एज 7th पॉइंट. सो आई this is the properties of indifference curve. I'll give you the rest of my videos where utility and all is explained nicely, and the definition is given in my video in the description box. Please like, subscribe my channel. Thank you.